It's a good morning from beautiful, beautiful Pangong Lake. Ah, witnessing the early sun at the shore of Pangong Lake was a dream for me and accomplished the dream. ये हमारे हट हैं जो पीछे आप देख रहे हो. These are the huts where we stayed and रात में भाई गजब की ठंड थी. But the hotel where the resort where we stayed, Pangong Heritage Resort, is utterly comfy. अंदर से रूम भी गर्म था. उन्होंने वाटर बैग्स दे रखे थे ताकि हमें रात में ज़्यादा ठंड ना लगे. बट इफ़ यू आर एट पेंगोंग लेक एंड नो मैटर how much amount of the cozy homes, the cozy rooms are, the water bags are, ठंड तो लगेगी ही. The nature is brutal here. अभी सब लोग सो ही रहे हैं एंड अभी जस्ट 6:30 AM हो रहा है. सो ही इज़ द बॉय नीरज. क्या हुआ, तबीयत सही है आपकी? तबीयत एकदम झक्कास है. कल आते ही थोड़ा बहुत फट गया था. हाँ, हवा बहुत तेज थी. हवा तो कल बहुत तेज. अभी भी कितनी ठंड है. अभी तो धूप है ना. रात में गजब की ठंड थी. रात में the weather at Pangong currently is brutal. You'll say. Not even harsh, it's more than harsh. बहुत ठंडी हवा है. And it's time to leave now. We were staying in Pangong Heritage Resort. Recommended for the view, recommended for the food, recommended for the network, because ये Pangong हेरिटेज रिज़ॉर्ट इज़ इन स्पार्गमिक और स्पार्गमिक में जियो का नेटवर्क है. 4G इंटरनेट भी चलता है. कंटिन्यूस नेटवर्क नहीं आता बट यस फॉर द कॉल थिंग, फॉर सेंडिंग व्हाट्सएप मैसेजेस बहुत अच्छे. रात में बेसिकली नेटवर्क बहुत अच्छा पकड़ता है. प्लस देयर इज़ ए हेल्थ फैसिलिटी इन स्पार्गमिक एरिया. तो अगर आप आओ एंड इफ़ यू नीड ऑक्सीजन यू विल गेट ऑक्सीजन ऑल्सो. दिस इज़ व्हाट Pangong Lake looks like at 9:30 AM. कुछ रूम में था नहीं ना बेबी. ओके, सो हल्ले जाने से पहले देयर इज़ ए शूटिंग पॉइंट एरिया इन Pangong Lake. द स्पेशलिटी ऑफ शूटिंग पॉइंट एरिया इन Pangong Lake इज़ कि वहाँ तक यू कैन ड्राइव, राइड द बाइक एंड गो. आपको वॉक करके नीचे नहीं जाना पड़ता. तो हमारे साथ बहुत ही लोग थे जो रिज़ॉर्ट से लेक तक नहीं जा पाए owing to high altitude conditions. तो अभी हम पहले शूटिंग पॉइंट एरिया में जाएंगे. वी विल क्लिक सम फोटोज़ एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स हार्ले. Depths of silence where echoes remain. You were the sunrise and I was the rain. A collision of souls opposing in flight. I was the darkness, you yearned for the light. Okay, so we have reached the shooting point area. ये देखो 3 Idiots वाले bulbs. This is our Indian flag. थ्री इडियट्स वाला स्कूटर जो करीना कपूर से चलाते आती है. जब तक है जान वाले बुलेट. इतनी चीज़ यहाँ पे. You were the laughter that kept me alive. You were hello and I was goodbye. An ember that flickered, that faded away. You were the summer, I was that same old shit in me. So this is all from the shooting point area of Pangong Lake.
and saying goodbye, alvida to Pangong Lake, and it's time to move towards Hanle. Now you're gone, and I'm losing my mind, losing my mind, losing my mind. Now you're gone. मिराक विला से पहले हम लोग एक ऐसे पॉइंट पे रुके हैं जहाँ से यू कैन सी डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू ऑफ पैंगोंग लेक, एंड इतना सुंदर दिख रहा है ना, इतना सुंदर दिख रहा है पैंगोंग लेक यहाँ से कि दिस नो वर्ड्स एक्चुअली विथ मी कि मैं उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब कर सकूँ. ये देखो, द बेस्ट बैकड्रॉप आई कैन एवर गेट, द बेस्ट बैकड्रॉप. स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ये देखो, ये सयान कलर है, ग्रीनिश लिटिल बिट. अब हल्का सा उधर जाओगे तो उधर अलग शेड है, एंड दिस इज़ द डार्क ब्लू. The last glimpse of the Pangong Lake. The Pangong Lake ends here, and उधर वो चली जाती है. So once you cross the Pangong Lake, जब पैंगोंग लेक आपको दिखना बंद हो जाएगा तो आपको एकदम ड्राई वेजिटेशन मिलेगी, एंड द फर्स्ट विलेज दैट यू विल कम अक्रॉस इज़ चुशुल. चुशुल का नाम हम लोगों ने सबने सुना है. रिसेंटली व्हेन देयर वाज एन आउटरेज विथ चाइना नियर पैंगोंग लेक, देन चुशुल came into limelight, and so blessed to be here. On every house in the Chushul village there is a tricolor Indian flag flying high, and we have stopped at Chushul for some coffee, for some refreshments. Out! One more. Oh, that's a huge 6. Hello, tell me your name. Aja. My name is Tanzin Dilik. Yours? My name is Jigmet Siri. What yours? My name is Jigmet Tama. Which class do you study? Which class? Fourth. 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 Everyone is for fourth. You are fifth. So guys, चुशुल में भी परमिट चेक होता है. वी वर जस्ट अबाउट टू लीव द विलेज जब वहाँ पे एक बंदे ने हाथ दिया एंड टोल्ड अस कि परमिट, वेयर इज़ द परमिट, विदाउट परमिट नो एंट्री टू हानले. Parallel to the border of India-China. Chinese base camp, Indian base camp. तो बेसिकली वो जो ब्लैक माउंटेन है वो दैट इज चाइनीज साइड. ब्लैक सेबथ, हाँ. ब्लैक सेबथ के बारे में आपने सुना होगा, जो चाइना के अंदर आता है. ब्लैक सेबथ द माउंटेन, जिसकी चोटी पे चाइना खड़ी है, नीचे हम खड़े हैं. That black mountain, right, is China. That's under China, that mountain. वो देखो, वो पहाड़ नहीं दिख रहा आपको? बीच में सेंटर्स में. अच्छा, सेंटर्स में कुछ तो उन्होंने बना रखा है ना. वो सारा रिवर दिख रहा है. जो नीचे से बह रही है, थोड़ा सा रिवर्स ले. हाँ, कौन सा रिवर? अच्छा, वो गालवान रिवर है. तो बेसिकली इस जंक्शन पे हमारी लड़ाई हुई थी. दैट्स द गालवान रिवर जो ऊपर
पहाड़ से नीचे आ रही है ना वो। सो ऑन द वे टू हनले फ्रॉम चुशुल, आफ्टर लेट्स से अप्रॉक्सीमेट 10 किलोमीटर्स यू कम अक्रॉस रजांगला वॉर मेमोरियल, एंड ये है रजांगला वॉर मेमोरियल जहाँ इंडियन फ्लैग इज़ फ्लाइंग है। हम वहाँ नहीं जा रहे हैं बिकॉज हमारा हानले में स्टे भी नहीं है, सो वी आर नॉट श्योर कि हमें कहाँ स्टे मिलेगा। सो वी आर रशिंग हार्ड टूवर्ड्स हानले रजांगला वॉर मेमोरियल, इंडियन ट्राइकलर फ्लैग। चलो चलते हैं। दिस इज ए पास, छागला, इसको छागला पास कहते हैं। 15,260 फीट। तो वन थिंग, ये जो है ये द लास्ट बॉर्डर का जो पहला बेस कैंप है। अच्छा, ठीक है, ओके बॉर्डर का फर्स्ट बेस कैंप मींस आखिरी बेस कैंप, लोमा कहते हैं इसको। ओके। इसके बैक साइड में पूरा चाइना का आपको पूरा रूट दिखता है। अब यहाँ से आपको अलाउ नहीं करेंगे। अगर मैं जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ, टूरिस्ट को अलाउड नहीं है। अच्छा, यहाँ के नेटिव्स को अलाउड है। जी। From Chushul to Hanle, after you cross the Razangla Memorial, there is a Sagla Pass, which is at 15,260 feet. And finally, we are in हनले। ये देखो हनले कुछ ऐसा दिखता है। सबसे बड़ा टास्क अभी हनले में ये है कि वी हैव टू सर्च आवर होम स्टे या होटल, जो भी मिल जाए, क्योंकि हमारा यहाँ का स्टे नहीं ऑलरेडी बुकड है या हमने पहले डिसाइड नहीं कर रखा है कि हम यहाँ पे रुकेंगे। एंड क्या रास्ता है भाई, क्या रास्ता है। The road to Hanle is beautiful, mesmerizing. The only drawback is it's near to border area, military area, so that we were not able to fly our drone. So चलो अभी पहले चलते हैं, होम स्टे सर्च करते हैं। पीछे हानले में एक मोनेस्ट्री भी है, वो वहाँ लेट्स सी जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं। केयरफुल। हानले होम स्टे है, इसमें इनका रूम कोजी है, वाईफाई चल रहा है, गर्म पानी दे रहे हैं ये लोग, तो ये सारी फैसिलिटी ये दे रहे हैं।
So this is the terrace of the guest house where we are staying in Hanle. The name is Hanle House, and the best part about Hanle House is it provides a Wi-Fi. Plus इस region में काफ़ी ऊपर height पे है. You get access to the terrace, and there is a hot running water available. So we actually looked many guest houses, homestays, but last में सबने ने बोला let's stay at Hanle House because धीरे धीरे ठंड बढ़ ही रही है. धीरे धीरे ठंड बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, एंड बहुत अच्छी जगह है. I just flew my drone over Hanle. serene weather है. Totally worth it. Now we are just waiting for the stars, for the Milky Way to show up, and we'll place our camera with the tripod in the terrace itself. So that's the number one reason we chose this guest house to stay. Plus rooms उनके काफ़ी warm and cozy हैं. Let's hope पेंगोंग की तरह हमें ठंड नहीं लगेगी, and we will be. रात में बहुत ज़्यादा पेंगोंग में ठंड लगी थी,